Closed doors, I'm a fool for your love. Hello friends and welcome to another escapade. This time I'm traveling to the Highlands of Scotland with my friends. This is 3 o'clock in the morning. Originally the plan was to fly from Bristol, but our flight got cancelled from Bristol airport, so we changed it to Luton airport. So fingers crossed we get a chance to fly and the flight doesn't get cancelled. Scotland! Once again! Yay! Bye bye! लड़कों की खुशियां ही हो रही हैं, लड़कों की Sir, ready है? Oh, yes, inshallah. ले लो. So boys have reached London Luton Airport. How are the spirits, guys? Looking forward to it? Okay then, let's go. So we have reached London Luton Airport and Kaleem Bhai has kindly booked fast track security check-in, and it's going to be a good experience. We don't have to wait in the long queues. So boys are at London. लग्जूरियस के ऊपर आप रोशनी डालेंगे सर. क्या क्या ब्रेकफास्ट भी आ रहा है? ब्रेकफास्ट में आ रहे हैं स्क्रैम्बल्ड एग. अच्छा. और उसके साथ हैश ब्राउन्स हैं. आहा. मैश्ड एवोकाडो है. डबल मैं नहीं खाता. और स्पिनिच भी है. और ओलोंडिक सॉस है भाई. ओलोंडिक सेफ सॉस. ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस. कैप्चिनो रॉयल इंग्लिश ब्रेकफास्ट. वाह सर, वाह कमाल ही हो ये. तो खत्म हो गया. ओए होए हैवी ड्यूटी ब्रेकफास्ट हो गया. भूखे आ गए हैं. क़यामत तक भूख भी नहीं. फिर इसके बाद आगे हमारा क्या प्लान है, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें. इसके बाद सर हम जो है हमारी फ़्लाइट है स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में, वहाँ हम लैंड करेंगे. वहाँ पे जो है हमारी गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है. मेरा वहाँ पे गाड़ी कौन सी आपकी कौन सी गाड़ी खड़ी है? रेंज रोवर वहाँ खड़ी है. हम जाएंगे और हम सारे नॉर्थ जो है हाईलैंड उस पर ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और we'll try to do as much as we can. So full of adventure. Looking forward to it. अच्छा कलीम भाई, क़याम व ताम का क्या बंदोबस्त किया? वो तो उस्मान भाई ने ऑर्गेनाइज किया. स्टाइल ऑफ लाइफ. सबसे पहले हम जाएंगे इन्वर्नेस से स्काई ऑफ आई. नहीं, आइल ऑफ स्काई या स्काई ऑफ आई. आइल ऑफ स्काई भाई जिनमें मौजूद जो सनब्लॉक्स चढ़ाने हैं उन पे हम बसेरा करेंगे. और फेरी पूल्स उसकी ट्रैक है. ये इंतहाई खतरनाक रास्ता है. आपके लिए जिन है, हमारे लिए फेरी है. ये रास्ता जो है कोई अटेम्प्ट करता है. अच्छा. बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन ये हो नहीं सका. तो ये हमारी कोशिश है इस दफ़ा हम इस जो है खतरनाक रास्ते को मोल लें. और मेरा रास्ता हम नया बनाए, नया रास्ता बनाए. एक नया रास्ता बनाए लोगों के लिए, फुटप्रिंट्स छोड़ें फॉर फ्यूचर जनरेशन. बिल्कुल, मैंने बात की वहाँ पे सारे लोगों से, मेरी बात हो गई है. कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं. बस ठीक है, ऑल अंडर. सबसे पहले आप डायरेक्ट. सो उस्मान, हाउ इज द ब्रेकफास्ट? जी उस्मान भाई, आपने गलत टाइम पे आप मेरे कमेंट्स ले रहे हैं. आपने पेट भर के खाना खाया है. लड़के बहुत ही दिल बर्दाश्ता है. नाश्ता करने के बाद क्या क्या हमारी उम्मीदें थी नाश्ते से. पेट भर के आपने खाना खाया है. पेट जैसे भरा है वो मुझे ही पता है. पेट इस वक्त लकड़ी और पत्थर से भरा हुआ है. आपने तो पोस्ट डेक मंगवाया था. हाँ, सॉस तो आई नहीं. अंडे गलत थे और सॉस आई नहीं. और मैंने वापस नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे था कि अब ये थूक के लाएंगे.
मैंने कहा यही दे दो। कलीम भाई ये गलत अंडे क्या होते हैं? Tesco's the cheapest. Then it's Morrison's at 189. I think Tesco's is 184. Great, that's right. Thank you. So we have reached Inverness and we are now in our Range Rover Defender. And the pilot is Mr. Yunib Ahmed. Co-pilot Bisman Fiyaz. Reporting for duty. And in supporting role, Khalif and Mudassir. शीशा नीचे कर रहे हैं इस तरह आपकी वो वीडियो सारी क्लाउडी हो शीशे से अच्छी आ रही है शीशे पे मुख्तलिफ लगी हुई है। So we are passing next to Loch Ness. Loch means lake. It's a Scottish word and it is around 23 miles. It originates from River Ness from the north and it flows towards south around southwest of Inverness. So Kaleem bhai, you were telling me some very interesting facts about this place. So Loch Ness, so जो Ness है, there is a myth कि उधर एक monster is called Nessie. Oh wow. और उसकी in the past there are a few sightings as well. People say there were sightings but no one has seen it yet. In recent times someone said that they have seen Nessie again. Wow. There's a monster who lives underwater in Ness, in the Loch Ness Lake. Oh wow. Called Nessie. Yeah, that's it. Is that his strength which shows up in the water? Might be, might be rippling the waves. So we better watch out then. Yeah, no swimming. No swimming. हमने की थी जब लोग वॉक कर रहे थे वो तो काफी मिलती है लेकिन ये वाली जाके चेंज हो We are on our way to Fairy Pools and we have just stopped over in a lovely village for a quick tea and cake break. Fabulous. I think you'll beg to differ. You won't like the rainbow. Oh, but this is great. Well, I would like to take this opportunity. Excellent job, Kaleem Bhai and Usman Bhai, for arranging the trip. And obviously, you were the catalyst in this trip for sure. So we have reached Fairy Pool. The views here are breathtaking. Just look at these majestic mountains. The view of these mountain tops covered by gigantic white clouds. So mesmerizing. So guys, we are just at Fairy Pools. Yeah, we did the long walk. Yeah, and there is this majestic mountain in the backdrop. Cloudy today. Yeah, we're just going to do this little hike, then we're going to go back to the car and then we're gonna keep driving. Further north. Yes. So Usman bhai, where are we going next now? We are going to
more landmarks in the very remote parts of Isle of Skye. One of them is a waterfall which lands direct into the sea. Yeah. And the other one is Old Man of Storr, very famous rocks. Yeah. So that's the plan. Complete wilderness, rugged mountains, very difficult trekking, but Yeah. we'll do it. Wow. That sounds exciting. Yeah. But we are a little bit tired now. I know, but guys, you'll have to man up. We'll have to go through. Yeah. Absolutely. Let's do this. We have just arrived at Kilt Rock, which is a very beautiful landmark. The name of this rock, kilt, it comes from the traditional Scottish dress that men wear. It looks like a skirt, and people say that these rocks resemble the shape of the kilt. Shortly we'll be looking at the waterfall from the Kilt Rock. It's a beautiful, beautiful view. And while you are here at this observation point, if there is a strong wind blowing, this is our Airbnb where we will be spending a couple of nights. It's located on the outskirts of Inverness. It's a little cottage which the landlord has built besides their main home. It's quite nice and it has got a big lawn in front of it. Let me give you a full tour of this. So this is the end of our day one. We'll be taking some rest now, and I'll see you in the next video where we will be visiting some exciting spots on our second day of trip.